Is my screen visible, Nitesh? Yes, ma'am. Visible. Okay. So today we are going to start with the basic concept in Python. जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हम जो बेसिक है कीवर्ड सिंटैक्स ऑपरेटर्स कमेंट्स एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स हाउ टू डिफाइन वेरिएबल how to assign value to the variable, then we'll see control structures जैसे loops conditional statements, all these basic things we are going to cover now. Okay. Okay, ma'am. Okay. So the very basic concept that we have already discussed is comment. So there are Yes, ma'am. two types of comments, single line comment and multi-line comment, right? So in Python, single line comment is given by hash. So anything that is followed by hash is considered as single line comment. And if you want to give multi-line comment, you have to give three double quotes, okay? And then everything written after these three double quotes will be considered as comment. It will not be executed. It will be considered as comment, and you have to close that comment again using three double quotes. Okay, this I think you already know. है ना, पता था ना ये या नहीं पता था? Yes, ma'am. पता था. Okay. Now we'll talk about keywords, right? What is keyword? Keywords are reserved words in Python that have special meaning, that are used for special purpose, right? What What do you know about Yes, ma'am. keywords? कीवर्ड्स में रिजर्व वर्ड मैम Reserved उसको words. हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो समझ जाएगा कि अगर हम इफ लिखे और एल्स लिखे तो वो हाँ, कंपाइलर समझ जाएगा. लेकिन आप ये जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको एज ए वेरिएबल नेम्स यूज नहीं कर सकते, राइट? यस मैम. जैसे ये व्हाइल है तो व्हाइल नाम का वेरिएबल आप डिफाइन नहीं कर सकते. सो दीज आर रिजर्व वर्ड, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रिजर्व वर्ड. सो दे आर रिजर्व फॉर समथिंग else which is already defined. You cannot use it for your purpose, right? They have already defined purpose for that particular keyword. Okay. उसके बाद है variable names, right? So there are certain rules, you can say, or protocols for while defining the variables. Okay, so basically what is variable? Variable is something in which you can store the values, right? So whenever you यस मैम. define any variable, that variable name must make sense means it should have some meaning. जैसे यूजुअली हम वेरिएबल नेम ऐसे ही दे देते, ए देते, बी देते, एक्स वाई जेड देते. so instead of that, when you are writing actual programs, so in that program you should give variable names which should be meaningful. For example, here if I want to store movie rating, so I will give name as movie underscore rating, so that whenever I see this variable value, I will get to know that this variable is for rating, right? So variable name must make sense. Then Python convention is to use lowercase letters for defining variables. Like for example, you can see here I am using all these letters into lowercase. My name equal to Mayuri Bhandari. So this is my name is the variable, right? So you can define your variable in any way, लेकिन Python convention is to use it in lowercase. ओके मैम. मैं कैपिटल लेटर नहीं लेते. कैपिटल लेटर ले सकते हैं. सी यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज कन्वेंशन, कि पाइथन में ऐसा कन्वेंशन है कि मतलब यूजुअली हम डिफाइन करते हैं स्मॉल लेटर्स में ही. आप डिफाइन कर सकते हो कैपिटल लेटर में, लेकिन आप कोई भी पाइथन का स्टैंडर्ड प्रोग्राम देखोगे या उनके ऑफिशियल साइट पे जाके कुछ प्रोग्राम देखोगे, तो वो उस प्रोग्राम में यू विल फाइंड दिस वेरिएबल्स आर डिफाइंड ऑलवेज इन लोअर केस. दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशन, कि जो स्टैंडर्ड रूल्स जो हम फॉलो करते हैं, तो वो रूल्स मैंडेटरी नहीं होते हैं, लेकिन इन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग दे आर यूज लाइक दैट. आया समझ में? यस मैम. Okay, we can see that in here only. Okay.
तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मुझे स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो आई डिफाइन लाइक माय अंडरस्कोर स्टोरी, this is my variable name. Okay, or I want to define this as a string, so what I will do, I will define it in a double quotes, right? And I can give any name, जैसे mm, 8,000 splendid suns. Okay, so this is what I have defined string. Okay, so here variable name is my story and this is the value. If I want to this, if I want to print this, so as you know how to print variable, print in bracket variable name, simple. नहीं कर पाया देख ली इतना ध्यान में रख लिया बताओ देखा वो भाषा पर लगा Listen, just a second. Now if I want to define some number, how will I define number? Let's say my grade is my variable, and in this I will assign value as 85. So this is how we define variable. Okay, there are various data types that we are going to see in further slides, but this is the basic idea of variable. So we define variable and we assign some value. Okay, now we were looking at some conventions, some rules to be followed while defining the variable. Okay, तो जैसे मैंने आपको बताया कि variable names must make sense. Can you see my Visual Studio screen? यस मैम। हाँ, सो फर्स्ट रूल इज वेरिएबल नेम मस्ट मेक सेंस। जैसे हमने एक वेरिएबल नेम देखा मूवी रेटिंग, तो जो भी कुछ आप नाम दोगे वेरिएबल के लिए वो कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। सो इट इट मेक योर प्रोग्राम मोर रीडेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल, राइट? देन पाइथन कन्वेंशन इज टू यूज लोअर केस लेटर्स, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट मैंडेटरी। आप यहाँ पे ओके, फर्स्ट आई शो यू दिस। जैसे I am storing my name in this my name variable. Here I am using all lower case letters. Okay, यहाँ पे मैं अपर केस में भी कर दूंगी तो भी ये मुझे कुछ एरर नहीं देगा। इट इज नॉट गिविंग एनी एरर, बट दिस इज कन्वेंशन। आप कोई भी पाइथन का स्टैंडर्ड प्रोग्राम देखोगे तो उसमें आपको सारे वेरिएबल्स ऐसे ही स्मॉल लेटर्स में डिफाइन दिखेंगे। दैट इज वाई you should follow that standard practice. That is why it is convention in Python to use lowercase letter for variables. Okay. Then third thing about variable names is Python is snake case. Snake case means for every word in your variable name, you separate it by underscore. Getting it? There are certain cases like if you see this my name, this is camel case. यहाँ पे क्या किया है हमने, जहाँ पे भी हमारा न्यू वर्ड स्टार्ट होता है वी यूज कैपिटल लेटर फॉर इट, दिस इज कॉल्ड एज कैमल केस। लेकिन पाइथन में हम कैसे करते हैं, वी यूज स्नेक केस। अगेन दिस इज कन्वेंशन कि अगर मैंने माय नेम ऐसे भी डिफाइन किया तो कुछ एरर नहीं आएगा। गेटिंग इट? यस मैम। हाँ, बट our convention standard practice is to use snake case, right? So we write like this, every word separated by underscore, this is called as snake case. Okay, I'll give here another example. जैसे यूजर इन्फो इज इक्वल टू ऑनलाइन। ओके, ये हो गया स्नेक केस।
Now next thing is variable name must start with letter or underscore. Okay, so whenever you will define variable, it should always start with letter either or underscore. You cannot define your variable name like this. Let's say if I give here, if my variable name, if I give 15 street equal to something. So see, this is giving you error, right? It is not considering this as a variable. Red line appear here, so that is the error. Instead of that, if I remove this 15, so everything again go back to normal. Now street is a valid variable, but here I cannot write any number, it becomes invalid. Okay, so this 15 street will be, I'll write here error. Okay, and last thing is Python is following PIP 8 standard. PIP 8, there are various standards that are followed in every language. Okay, so in Python, the PIP 8 standard is followed. That means, जैसे when you define any variable, here spacing is given, right? When you assign any variable, equal to के पहले और equal to के बाद में हम space use करते हैं. Again, these all are conventions. Okay, and conventions are never compulsory. ऐसे नहीं है कि अगर मैं ये space निकाल दूंगी तो मुझे error आएगा. No, it will not give error. But again, it is a standard practice to write the programs like this. Okay, so it is following PIP 8 standard. मैम पेपेट एक पाइथन टूल है क्या? नहीं, पेपेट स्टैंडर्ड है. प्रोग्रामिंग, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. ओके मैम. तो स्टैंडर्ड मतलब उसमें कुछ रूल्स मेंशन किए हुए होते हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करने हैं, उसको वैल्यू कैसे असाइन करनी है. कोई भी कोड ब्लॉक आप लिखते हो तो कितने स्पेसेस देने हैं, या एक लाइन में लिखना है, तो वैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं अलग अलग कोई भी लैंग्वेज के. तो वैसे पाइथन फॉलो करता है पेपर स्टैंडर्ड. ठीक है, वैसे पेप 257 एक स्टैंडर्ड है, पेप 20 एक स्टैंडर्ड है, पेप 484 एक स्टैंडर्ड है. ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं. स्टैंडर्ड्स मतलब जिसमें कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स, कुछ कन्वेंशन ऑलरेडी डिफाइन होते हैं किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए. तो कोई भी जब न्यू लैंग्वेज क्रिएट होता है, न्यू लैंग्वेज इन्वेंट होता है, तो कोई तो एक स्टैंडर्ड उनमें से वो चूज कर लेता है और प्रोग्रामिंग के लिए वो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं. ठीक है, एनी डाउट? नो मैम. ओके, देन उसके बाद हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स. देन नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप्स. So in Python we have various data types that are supported. Okay, but as Python is dynamically typed language, जब आप variable define करते हो, variable definition के time पे आपको data type नहीं देना पड़ता है ना? ये आपको पता है. We have seen this. Now these are some basic data types, or we also call this primitive data type. जैसे integer है, floating point, boolean, string. These are primitive data types in Python. And then उसके बाद some advanced data types are also supported by Python, जैसे list, dictionary, tuple, set, etc. So now we'll see this one by one data type. So how to define integer? You already know. If I want to define an integer like age, I can directly assign some value, right? Age is equal to 38. So this is integer, और यहाँ पे हमें डेटा टाइप नहीं देना पड़ता है because Python is dynamically typed language. So when you, as soon as you assign 38 to age, it will
automatically consider this age variable as integer, right? Now for printing it, I can write like this, print age. Now one more thing here, how will you find the data type of this variable? जैसे हमें पता है कि it is integer, but if I want to print its type, if I want to confirm its type of any variable, how should confirm it? For that we have type function, this type of age. It will give you type of that particular variable, and if I write here print type of age, so it will print that type. Okay, we will execute this program so it will be clear. Okay, this is the value that we have printed, and after that what you can see here, class int. So in Python every data type is a class. इंटीजर हो, फ्लोट हो, ये सारे क्या है, क्लासेस है. एंड वी आर यूजिंग व्हेन वी डिफाइन एनी वेरिएबल, दैट मींस वी आर क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, right? So what is type of this age? Yes, what you can see here, integer. integer, right? So this is how we can print its type. Similarly you can define float. फ्लोट भी ऐसे डिफाइन करना है, लेट्स से ग्रेड इज इक्वल टू 8.9. we can print that variable and we can print its type, जैसे print type of grade. Okay, I'll comment this. Now we will execute this. Okay. So here you can see value is printed, and after that class or type of that variable is printed, that is float. Okay. Similarly, another data type that is supported in Python is boolean. तो जैसे हम बाकी ग्रेड इंटीजर में या फ्लोट में जैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे ही करते हैं बुलियन में भी, लेकिन उसको हम वैल्यू क्या देते हैं, ट्रू या फॉल्स, राइट? जैसे अलार्म इज इक्वल टू ट्रू, एंड व्हेन यू राइट दिस ट्रू, टी मस्ट बी कैपिटल. ओके, अलार्म इज इक्वल टू ट्रू जैसे, या ऑफलाइन इज इक्वल टू false. Okay, if you are using IDE you will automatically get that, but you should know true and false. These are the boolean values where T is capital, F is also capital. Okay, then how to print it? We can directly print alarm offline. Here I am not using any formatting because our focus is on data type. Okay, and now how to print their type? Same, print type alarm, and both are of same type. Still we'll write here print type of offline. Okay, I'll comment this. Now we will execute this. So see here, value for alarm and offline is printed here, and then for both the classes which bool. Okay, so bool means boolean. After that we have very important data type, that is string. So let's define some string. Why I'm saying this is important, because we have so many functions on string for performing various string operations. Okay, so let us define one movie name here. How to define string? Variable name equal to, now you have to write in double quotes. Okay, so I'm giving some movie name, let's say The Wood.
bad and ugly. Okay, again to print this string, same, in print its name. If you want to see its type, you can write type of movie. Okay, let us execute this. Okay, I'll first comment this. Now we will execute. So here you can see the movie name is printed, and after that the name of class for string is str. Okay, bool for boolean, str for string. Any doubt in the data type? No, ma'am. Till string, we'll see description for string first now. So as you know, string in Python is surrounded by either single quote or double quote. Okay, जैसे हमने string define किया double quote से, same like that you can define it using single quote. It will also considered as string. Okay. Now what is string? String is array of bytes representing Unicode characters, or string is a sequence of characters simply. Now Python, this is one more important point in Python. um, like other programming languages में आपको और एक data type होता है char, right? What is char? Char is also a string type, ma'am. Char is not string type in other languages. What is char? Char is a data type in which you can store a single character, right? Okay, ma'am. So that you give in single quote and one single character you mention, that is called as char. Okay, let me give you one example. Just a second. जो अदर लैंग्वेजेस है जैसे फॉर एग्जांपल सी या फिर जावा, सो इन दैट you have one more data type called char, right? Or char c is equal to a. This is how you define a character. It stores a single character. Okay, it can be uppercase, it can be lowercase, but this is how you define character. जैसे char c1 is equal to z, ये क्या हुआ? Char. In other languages I am talking about. Now Python does not have character data type. So how will you represent, how will you define a single character? Simply a string with length 1, right? तो जैसे आपको अगर Python में एक single character define करना है तो आप कैसे करोगे? C is equal to A, simply. Yeah, you can give it in double quote या single quote. So this is how you define character. Yeah, C1 is equal to Z. ये हुआ. Sorry. This is in Python. Okay, and this is in other languages. Got it? Yes, ma'am. And when you define string, square brackets can be used to access elements of string. So if you are defining a string और आपको वो string में से एक single character access करना है या part of string access करना है, you can access it using square brackets. Okay, that we'll see further. Now, as I said, string is very important data types. We have multiple methods to operate on string because many times we need it in actual development. We have long string and we have to extract some parts of string. We have to
perform various operations on string, like you want to convert it into uppercase, you want to convert it into lowercase, you want to trim the string, you want to find some characters in the string. So we have many methods on string using which you can perform different operations. Okay, so here we'll see a summary of those methods, and after that we'll see one program how to perform various operations on string. Okay, so first method here is len. Okay, so this len is the function, is the method which gives you length of the string. Okay, so what is length? What is length of string? Total number of total, Character. total number of characters in the string. Okay, that is given by this length function. Now there is one operator, that is two square brackets. So these two square bracket specify character in string or extract part of string. So in this square bracket you give some number like 0. So it will give you first letter. If you give 2, it will give you third letter. Okay, so that indexing start from 0. So accordingly you can locate particular letter, particular character in your string using square bracket. Okay, or if you give like this 0 to 10, it will give you a part of string starting with first letter till uh, ninth letter or 10th letter. Okay, now next operator is plus operator. ये plus operator हमने input में भी देखा था. It is used for concatenation. So if you have two different strings and you want to merge them, you can use plus operator. Okay, so जैसे आपके पास str है hello and str1 है world. Okay, and if you want to concatenate, you can concatenate it like simply using plus operator, str plus str1. Then we have a function method called upper. So as its name suggests, it will convert your string to uppercase. Then we have lower, it will convert your string to lowercase. Then you have title, it will convert it into title case. So title case means convert first letter of every word to uppercase. Okay, so this title will convert first letter of every word to uppercase. Then we have three methods to remove spaces in the string. Okay, extra spaces from the string. So this there are three: strip, l strip, r strip. Okay, so we will see how they work. Then find is the function which gives you index of special character. जैसे आपके पास ये string है hello और इसमें आपको o find करना है. So what you will use? You will use find function. Find function will give you index of this o letter if it is present. ठीक है? Then we have next function, that is replace. Replace is used to replace character or sequence of character in the string. ओके, अभी के लिए आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन याद रखो, हम प्रोग्राम में ये सब फंक्शंस यूज करके देखेंगे. देन फाइनली वी हैव टू मोर फंक्शंस, इन एंड नॉट इन. सो इन और नॉट इन क्या करता है? इट विल जस्ट चेक वेदर अ कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग. ओके, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इन? फाइंड आपको रिटर्न करेगा इंडेक्स, लेकिन ये इन और नॉट इन आपको रिटर्न करेंगे बूलियन वैल्यू. ये सिर्फ चेक करेंगे कि एग्जिस्ट है या नहीं है. इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, इट विल जस्ट टेल यू yes or no. Okay, so the return type for this is boolean and return type for find is index. Got it? Yes, ma'am. Okay, just now we'll see program for string. Okay, here just wait for 2 minutes, I'll come back.
Sorry for the interruption. Okay, so let us start with the string methods. Okay, so the first method that we have seen in string was len. What is purpose of len? Length. Length, right? So let us define here one string, जैसे address equal to, let's say, Pune. Okay, how to find its length? len of address, right? And if I want to print this, I will simply write print before that, print len of address. So what it will do, it will find length of this string and print it. Okay, let us execute this. So here 4 is what? Length of the string. How many characters are there in this string? 4. Okay, so that is why the length is 4. Clear? Yes, ma'am. Now, secondly, we'll see this notation, square brackets, square operator. How to use it? It will, what is function of this operator? किसके लिए यूज करते हैं हम ये? Particular character, ma'am. Index. Index. To locate character at particular index, right? So I'll just change this address and we'll store some long address, let's say Maharashtra. Okay. Now, if I want to access character at particular location, what I will do, address of, let's say, 5. Just comment this. So indexing start with 0. So which character it will print? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so I guess it will print H. Let us execute. So here you can see it has printed what? Then if I write here address of 0, so it will give you what it will give? M. M, right? So 0 is the first character, right? Now if you want to print last character, what you will do? Yes, 8. okay. कैसे मिला आपको 8? You have calculated these letters, counted Yes, these ma'am. letters. ओके, और आपके पास बहुत बड़ा स्ट्रिंग है तो क्या करोगे? Ma'am, ये तो मतलब काउंट करने जैसा स्ट्रिंग है. इट इज स्मॉल स्ट्रिंग, यू कैन इजीली काउंट इट, दैट इज व्हाई यू सेड 8. But if you have a long string, what you will do here? and Q Sorry, क्या करोगे? आपके पास लेंथ है, राइट? यू कैन yes, ma'am. कैलकुलेट लेंथ. लेंथ गिव्स यू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? सो इसका लेंथ कितना Okay, होगा? ma'am. 9, राइट? बट योर इंडेक्सिंग स्टार्ट विथ 0. सो व्हाट यू विल गिव हियर? क्या दोगे इसमें?
एलियन ऑफ एड्रेस दोगे तो हो जाएगा। यस मैम। कैसे होगा? लेंथ कितना है आपका? 9 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0। 0 से। तो आपको क्या देना है इसमें? एलियन ऑफ एड्रेस -1। आया समझ में? यस मैम। So this is what it is giving last letter. Okay, but there is one more method to print last letter. Simply you can give -1. No need to write length of address. अगर आप सिर्फ -1 देते हो तो भी ये क्या प्रिंट करेगा? लास्ट लेटर। ओके, सो बिकॉज इन स्ट्रिंग you can count your letters from both the sides। जैसे आप यहाँ से काउंट करोगे तो 0 1 2 3 ऐसे काउंट होगा, और अगर आपको पीछे से काउंट करना है, इफ यू वांट टू काउंट फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, यू कैन स्टार्ट विथ -1 -2 -3 -4, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। गेटिंग इट? मतलब अगर मुझे लास्ट लेटर चाहिए तो सिंपली आई विल गिव -1। ओके, लेट अस चेक दिस। इसको मैं कमेंट कर, गॉट इट? -1 से क्या मिला हमें? ए। A. A means last letter, right? Now instead of -1, if I give -2, I should get R. Okay, तो चेक करते हैं हम ये। Got it? यस मैम। So in Python, string reading has become very easy. कोई भी कैरेक्टर आपको लोकेट करना है, you can read that string in forward as well as backward direction. Backward direction से करना है तो you will start with negative numbers जैसे -1 -2 -3, and if you are starting with in forward direction you will start with 0, so 0 1 2 3 like that it will index your index characters in your string। ठीक है? Okay, now next we will see with that square bracket notation you can locate sequence of character। मतलब इससे हमने देखा कि we were locating a single character। इससे हमें क्या मिल रहा था? एक single character मिल रहा था, right? Now we'll see कि अगर आपको सब स्ट्रिंग चाहिए वो भी आप ये स्क्वायर ब्रैकेट से प्रिंट कर सकते हो। हाउ? प्रिंट इन ब्रैकेट एड्रेस, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको देना है, लेट्स से आई वांट टू फेच स्ट्रिंग फ्रॉम 0 टिल थर्ड कैरेक्टर, तो आई विल राइट हियर 4। गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड एज रेंज। यू कैन स्पेसिफाई रेंज, और जब भी आप रेंज देते हो तो रेंज विल ऑलवेज स्टार्ट विथ, हियर अगर आप 0 to 4 देते हो तो इट विल start with 0 and end with 4 minus 1, that is 3। तो ये प्रिंट करेगा 0 till थर्ड इंडेक्स तक। गेटिंग इट? ये क्या है? यस मैम। रेंज। तो कहीं पे भी आप रेंज दो, मेड बी द फॉर लूप, मेड बी द लाइक रेंज इन द प्रिंट, और यू वांट टू लोकेट सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग, ऑलवेज क्या होता है, जब भी कहीं पे भी आप कोलन से जब रेंज मेंशन करते हो तो दिस इज इंक्लूसिव एंड दिस इज एक्सक्लूसिव। मतलब 0 को वो इंक्लूड करता है, 4 को एक्सक्लूड करता है, मतलब
रेंज में जो आप एंड एंड का नंबर देते हो वो उसमें इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूड होता है, तो उसके पहले तक ही वो कंसिडर करता है। गॉट इट? नाउ विल सी दिस हाउ इट इज प्रिंटिंग। व्हाट वी हैव डन हियर, एड्रेस इन स्क्वायर ब्रैकेट 0:4, तो 0 से लेकर थर्ड इंडेक्स तक वो प्रिंट करेगा। ओके, आई विल एग्जीक्यूट। आया समझ में? 0 1 2 3 कौन से इंडेक्स तक प्रिंट किया? 3 इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स तक, फोर्थ वाला नहीं प्रिंट हुआ। सो 0 1 2 3 MAHA इतना प्रिंट हुआ। ओके, नाउ हमने यहाँ पे जैसे देखा कि आप रिवर्स डायरेक्शन में रीड कर सकते हो यूजिंग निगेटिव नंबर्स, वैसे ही आप ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए भी आप निगेटिव नंबर्स यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे लास्ट के 3 चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, क्या देना पड़ेगा लास्ट के 3 के लिए? यस, -1 -1 2 3 हुआ, -1 to -3, सॉरी -4। तो आप उल्टा बता रहे हो, -4 to -1। ओके, आई एम सॉरी। -4 to -1, इसमें क्या होगा? ओके, लेट अस सी क्या होता है। एच टी आर हाँ, ये रेंज में क्या हुआ? जो लास्ट वाला है वो एक्सक्लूड होता है, तो -1 एक्सक्लूड हो गया, राइट? इसीलिए उसने प्रिंट किया सिर्फ HTR, ये -1 वाला प्रिंट नहीं हुआ। गॉट इट? यस मैम। जस्ट अ सेकंड। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है? नहीं मैम। नाउ सी, अगर मुझे शुरू से लेकर एंड तक पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करना है, या एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेकर उसके आगे का पूरा ही प्रिंट करना है, तो व्हाट वी कैन डू, जैसे मुझे थर्ड इंडेक्स से लेकर आगे का पूरा प्रिंट करना है, सो व्हाट आई कैन डू, आई विल ओनली गिव 3 कोलन। 3 कोलन मतलब स्टार्ट फ्रॉम थर्ड कैरेक्टर टिल एंड। कोलन के आगे अगर आपने कुछ भी नंबर नहीं दिया तो उसका मतलब होता है टिल एंड। ओके, तो in this way also you can write. Okay, let us check. तो see, A से लेकर end तक पूरा प्रिंट हुआ। Got it? Now similarly you can use it like this, जैसे आपको स्टार्ट करना है शुरू से और एंड करना है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे 6। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो स्टार्ट इंडेक्स है वो स्किप कर दिया, वो ड्रॉप कर दिया। सो इफ यू डोंट गिव द स्टार्ट इंडेक्स इट विल ऑटोमेटिकली कंसिडर इट एज अ 0। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने 0:4 दिया, तो ये 0 नहीं भी देते तो भी चलता है, सिर्फ :6 देने से वो 0 से 6 तक या 5 तक कंसिडर करेगा। ओके,
Okay, let us check. See here. यहाँ पे हमने 0 नहीं दिया था, लेकिन ऑटोमेटिकली वो 0 से स्टार्ट हुआ टिल 5th इंडेक्स. ओके, तो ये जो 6 वाला है, इट ऑलरेडी ऑलवेज एक्सक्लूड दिस वन. तो ये अगर 6 देते हो तो 5th तक ही होगा. गॉट इट? यस मैम. और वन मोर थिंग, ये आपको पूरा ही स्ट्रिंग प्रिंट करना है, लेकिन आपको कुछ रेंज मेंशन, मतलब रेंज देना है. सिर्फ आप कोलन दोगे, स्टार्ट भी नहीं दोगे और एंड भी नहीं दोगे, तो क्या होगा? यस, कैन एनीवन गेस? हम पूरा स्ट्रिंग कंप्लीटली प्रिंट करें. पूरा ही प्रिंट होगा, बिकॉज व्हेन वी एक्सक्लूड दिस, दैट मीन्स वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 0. एंड जब हम ये लास्ट एंड वाला इंडेक्स नहीं देते हैं, रेंज में नहीं देते हैं, दैट मीन्स वी वांट टू प्रिंट टिल एंड. तो ये अगर सिर्फ आप कोलन दोगे तो इसमें क्या होगा? 0 से लेकर एंड तक पूरा ही स्ट्रिंग प्रिंट होगा. ठीक है, हियर यू कैन सी. एनी डाउट? नो मैम. ओके, फाइन. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑपरेशन था कॉन्केटिनेशन. कॉन्केटिनेशन के लिए क्या है? विच ऑपरेटर वी यूज फॉर कॉन्केटिनेशन? प्लस ऑफ. Plus operator. Okay, so let us define one variable country equal to, let's say, USA, and city equal to, let's say, New York, NYC. If I want to concatenate this, how will I concatenate? Using plus operator. Let's say address is equal to country plus, जैसे मुझे बीच में कॉमा देना है, तो व्हाट आई विल गिव, प्लस, दिस इज आल्सो वन स्ट्रिंग, राइट, कॉमा, plus city. And then if I print this add, it will concatenate these two strings and then print it. Okay, let us execute this. Okay, so here you can see USA और NYC, ये क्या किया हमने? Concatenation. Got it? वैसे ही यस मैम. हम यूजिंग फॉर्मेटिंग भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं. जैसे हमने देखा एफ से फॉर्मेटिंग होता है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं. कंट्री, पहले सिटी लिखते हैं, सिटी कॉमा कंट्री. ठीक है, तो ये क्या हुआ? This is also one type of concatenation, but this is formatted string. Okay, execute this. See, same print हो रहा है, right? Clear? Concatenation. Simply we can use plus, or you can concatenate like this as well using formatted string. Okay. Now next is upper function. Okay, you can define any variable, or if you want to convert it to uppercase, you can simply use upper function. तो कैसे करते हैं? जैसे we already have this address, we can use upper on it, and then we will print this, print address of upper. ये क्या करेगा? It will print that address in uppercase. It will convert basically it to uppercase and print it.
See here you can see, right? All is in upper. Similarly you can use lower, सिर्फ upper की जगह पे हम करेंगे lower, and if I execute this it will print it in lower case, right? And in the same way you can use title, but title will give you effect only if you have more than one word, right? जैसे instead of that we'll use this add, address की जगह पे हम यहाँ पे यूज करेंगे add because it contains two words, right? Okay, now execute this. क्या हुआ? इसको मैं uncomment कर दूँ. यहाँ एड्रेस में हमारे पास दो वर्ड्स है, that is why I am using this add for title case. Okay, so that you can see it. तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइटल केस से first letter of every word will get converted to uppercase and rest of the letters will get converted to lowercase. Clear? Any doubt till now? नो मैम। Okay. ये जो remaining functions है that we'll see tomorrow. ठीक है? For now we will stop. Thank you. थैंक यू मैम।